ABN News International. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा शबीर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बरेडफोर्ड से ब्यूरो चीफ ABN न्यूज़ इंटरनेशनल ज़ाहिद مرزا की रिपोर्ट के मुताबिक ख़वातीन को बााख्तियार बनाने और इनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए बरेडफोर्ड यूनिवर्सट्ी में ज़ाती दफाع के हवाले से बाकसिंग ट्रेनिंग का एहतमाम किया गया। बरेडफोर्ड से ताल्लुक रखने वाले सपरफलाई बाक्सिंग आलमी चैम्पियन बाक्सर तासिफ खान ने स्टूडेंट्स को सेल्फ डिफेंस की टेक्निक से मुतारफ़ करवाया। यूनिवर्सिटी के तलबात के लिए मुनक्कद ये ट्रेनिंग सेशन ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद के ख़ात्मे के लिए जारी मुहिम 16 डेज़ एक्टिविज़म अगेंस्ट जेंडर बेस्ड ऑफ वायलेंस की जारी सरगर्मियों का हिस्सा है। आलमी बॉक्सिंग चैम्पियन तासिफ खान ने कहा कि ट्रेनिंग सेशन का मकसद सिर्फ बॉक्सिंग सिखाना नहीं बल्कि ख़वातीन में एतमाद पैदा करना और उन्हें अपने इर्द गिर्द के माहौल से बाखबर रहने की तरबियत देना है और उन्हें माशरे में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाना है। बरेडफोर्ड यूनिवर्सिटी की सोशल जस्टिस सोसाइटी की सदर सामिया महबूब ने कहा कि तासिफ खान नौजवानों को बाख्तियार बनाने और कम्युनिटी की खिदमत के हवाले से जाने जाते हैं। बॉक्सिंग सेशन में बुनियादी जिस्मानी तकनीकों को ज़हनी बेदारी की हिकमत अमलियों के साथ मिलाकर ये ख़वातीन आज यहाँ से ज़्यादा पुरएतमाद और ख़ुद के दिफा के लिए बेहतर तौर पर लैस होकर जा रही। वाइस चांसलर शर्ली कोगडन ने मुहिम के हवाले से कहा कि हमारी मुहिम अक़वाम मुत्तहिदा की इस प्रोग्राम का हिस्सा है जिसका मकसद ख़वातीन और लड़कियों के ख़िलाफ़ तशद्दुद का ख़ात्मा करना है। हम ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाना चाहते हैं ताकि वह अमली महारतों पर अबूर हासिल करते हुए अपनी हिफाजत कर सकें और माशरे में बिला खौफ अपना किरदार अदा कर सकें। बॉक्सिंग ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेने वाली तालबात ने कहा कि ऐसी सरगर्मियों से ख़वातीन में खुद एतमादी पैदा होती है, अपने माहौल का शऊर हासिल होता है और वह खुद को महफूज महसूस करती हैं। Okay, we're here today as in Bradford University for the ladies session, self-defense session as part of the 16 days of activism, and really we're out here as part of our culture, mine personally, part of our upbringing, to respect our ladies in our family, give them that respect and daraja they deserve. And it's great to hear and great to see really people from all walks of life coming together and being a voice. It's important for being a voice together collectively to make a louder kind of noise ultimately. And I think, like I said, it's great to see Bradford University supporting this, the Social Justice Society and also the media. That's why I'm grateful, I'm humble, and I'll continue supporting such causes for violence against ladies and girls. Self-defense is always important, not just for males but also for females. Again, the day and age we live in and what we have to do for safety, for our own self-confidence, for our own matters in life. It gives you discipline in life, but also, like we know, it's very, very important to have that kind of safety and security for having our own self-defense, as it's important. Just like we say for males, it's just as important for females too. And that's why we're here today, to take the ladies through the paces and have a good self-defense session, but at the same time, learn some key skills in life. So being here is really important to me because self-defense for women is obviously a very important matter, and I think everyone should take it seriously. Being here today allows me the opportunity, but not only me, but also the people around me and the girls that I hang out with and the girls that are surrounding me across the world, to practice self-defense, and we get to move our bodies and acknowledge that we can take care of ourselves, we can protect ourselves, and everyone should be confident in the woman that they are. Okay. My name is Shirley Condon and I'm the Vice Chancellor at the University of Bradford. I'm here with Tasif Khan and Samia, and we're here to really support the 16 days of activism. That we have great leadership from Samia, because she's encouraging us to really stand out and shout out to make sure that we don't tolerate any acts of violence or abuse towards women and young children, because too many across the world are harmed every day by a male member of their family or close friends. And so here at the University of Bradford, with our amazing supporters here, we are making sure that we shout out, we don't tolerate it, we support our young women and children to thrive and to be able to be proud and empowered. I'm Samia, the President of Social Justice Society, और आज जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में the super flyweight champion Tasif Khan सेल्फ डिफेंस क्लासेस डिलीवर कर रहे हैं सारी विमेन के लिए। 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म का ये एक बहुत बड़ा इंटेग्रल पार्ट है कि हमें अपनी विमेन को
سیلف ڈیفینس کی ٹیکنیک بتائی جائے اور اس کو لیڈ کرنے والا ہمارا اپنا پاکستانی برٹش بورن تصیف خان ہیں. سو اٹ شوز کہ ہمارے برٹش پاکستانی مسلم men are the positive role model and they're taking the lead, and whatever you hear in the media about our Pakistani Muslim men, it's not what they are. So the role modeling is happening right here, right now, to end the gender-based violence. Thank you. In the face of 16 days of activism, I'm proud to announce the honored doctorate at University of Bradford and Superfly World Champion, the Tasif Khan. Please join me. Thank you so much for joining this 16 days of activism. Thank you so much. Sometimes we are late, but them guys are here and giving the coverage, showing the people in Pakistan the positive image. We people are living here is also from Pakistan, and we see the stereotype in the UK nowadays. And people like him and Tasif Khan, when they tell that we are a part of this community, we do not need to segregate between these two communities. Where we live, we need to contribute and we honor the British culture and values as well, meanwhile holding our own cultural values as well. That's a big integration we do. And thank you so much, Risa, Samia. Thank you so much, Tasif. And now we would like to officially start the boxing ring for the female, and girls get into the ring and smash it. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ABN نیوز انٹرنیشنل. Subscribe and keep watching ABN News International.